So good morning everyone. Hi, this is Jaynesh here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So students, आज के इस वीडियो में I am going to start with the second chapter of our 10th standard textbook from CBSE French, and the name of the chapter is Après le Bac. Okay, so le Bac, that is le baccalaureate. The spelling is given in the chapter अपन करेंगे. So baccalaureate is equivalent to 12th standard in our country, India के अंदर. And so what are the plans of the students after completing their baccalaureate, after completing their 12th standard? That's the name of the chapter, and it will be discussed. The entire education system of France as well as India is going to be discussed in this particular chapter. तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया था. आज का ये वीडियो है and I'm going to start the second chapter. So let's start with the chapter. The plan is to complete the entire chapter properly, page wise page, and I'll make sure that you guys understand each and everything very nicely. Okay, so the name of the chapter is Après le Bac, and we are on page number 11, students. Chalo, great. So I'm going to put this video a little smaller. Okay, it says, so quand j'aurai fini mon bac, je ferai des études technologie. So when I will have finished my baccalaureate. So students, in this particular chapter, they have used majorly two senses, le future et le future antérieur. So antérieur. So exactly what do we have in this particular two tenses, and how to conjugate those two tenses will also be taught in this particular video today. So when I will have finished my baccalaureate, I will do my technology studies. So the girl is saying that. So let's see what the guy is saying. Après mon bac, after my baccalaureate, I will go to the fac. Fac is faculty. Okay, so basically उसका भी आगे कुछ plan है. Which means, students, la fac is the university or the college. Fine. So let's go down. The page number is 11, and let's see. Pauline and Ali for terminer leur bac. So Pauline and Ali are two characters. They are given over there, and they're going to finish their bac. They are discussing about their studies. So what are their plans for studies is what they're discussing right now in the cafeteria of the college, So salut. So the conversation is going to be between Pauline and Ali. So hi Ali. So Ali says, hi Pauline, how are you? She says, I'm fine. Pourquoi as-tu l'air inquiet? So why do you seem so worried? Why do you seem so worried, students? ये उसका question था. Just one second. Okay. So why do you seem worried? So, je m'inquiète de mon avenir. I am worried about my studies. Quand j'aurai fini mon bac. So when I will have finished my baccalaureate, je ne sais pas quoi faire. So students, Ali is quite confused. उसको पता नहीं है that what he is going to do or what he has plans. Maybe he's quite confused about his career. So Pauline is asking, why? What do you wish to do? So Ali says, I want to continue my studies in the university. So Pauline says, and what after that? Okay. So Ali is saying, do you see the studies in the university are very expensive. They cost very expensive. And my parents are in Senegal. And Ali ke jo parents, they live in Senegal. Will they have the mean to pay the fees of my studies? So Ali is quite worried because whatever things that he has in his plans, in his mind, is very expensive, and he's just wondering how will he be able to pay the fees of his studies. So Pauline says, pourquoi faut-il dépendre? Why is it necessary to entirely depend on your parents? You can have bourse de gouvernement. Bourse de gouvernement is government scholarship. You can have government scholarship. Moreover, you can also find some jobs. Okay, that is part-time jobs. You can also find some part-time jobs. Great. So let's move over to the next page now. So Ali continues. For example, so Ali is asking what kind of part-time job? Okay, batao. So le soir, in the evening, quand tu seras rentré, when you will come back from the university after the lectures. Okay, in the evening when you come back from the university after the lectures, you can find some part-time jobs. So what kind of part-time jobs they're talking about over here is babysitting, or to wash the car, or to work in a supermarket,
and C. So like this, you will be able to earn what it is necessary to do your studies. So basically, Pauline is giving some ideas to Ali what kind of part-time job that he can do so that he can earn some money, some pocket money, which will obviously help him to pay his exam fees or studies fees. So Ali says, merci beaucoup, thanks a lot for your advice. Oh ho, मतलब जैसे कि अली को ऐसा पता ही नहीं था. So Ali says, thanks a lot for your advice. Your words have relieved me. Okay, your words have really made me feel good. Yeah, apropos, quels sont les projets? So basically now Ali is asking, apropos and according about you, what are your plans? So Pauline says, letters and human size does not interest me. Yet they do not interest me. I am eager to do some other studies. So Ali is asking like what? So she says, je voudrais, I want to enter in IUT. What is IUT, students? IUT is Institute of University of Technology. Okay, the studies related to technology. To do my studies of technology. So Ali says, these schools, are they not expensive? Okay, so Ali is all about money minded person. Okay, so Pauline says, yes. See, matlab yes hota hai. Yes, but my parents are rich enough. So Pauline को life में कोई टेंशन नहीं है. उनके parents तो बहुत अमीर है. Okay, so my parents are rich enough. I don't have any worries to pay my studies. Contrary, when I will exit from this institute, I will get a job and I will search a job. And उसको easily job मिल जाएगी बच्चे लोग. Bon chance, मतलब fine, all the best. So they both says all the best to each other and then they leave. Okay, बच्चे लोग. So like the previous chapter students, look what I have done over here is I have written each and everything, the entire English translation over here for you guys. So if you want, you can just take a screenshot of this so that you don't have to keep writing one word by word. And look over here, even this part I have written each and everything, both the pages, so that you can easily write it down if you want. Chalo. So students, jitne bhi textbook ke andar English translation, I'm going to make sure that I'm going to make a PPT. I'm going to write over there. So that if you miss out any of the words while I am speaking or I'm explaining you guys, you can get it over here. Fine. Chalo, great. I'm moving forward. So now the next thing that we have is some exercises, students, some exercises, and the exercises is say true or false. Say true or false. Dit vrai ou faux. Chalo. So the first question is, Pauline says études à l'université. So Pauline wants to do her studies in the university. So answer is faux. Ali wants to do his studies in the university. Second one, Après le Bac. So one does the baccalaureate dans le lycée. So the answer is true. Yes, students, baccalaureate lycée में होता है. Okay, baccalaureate is equivalent to your 12th standard, and lycée is somewhat like your higher secondary school. Les études, the studies in the university do not cost expensive. ये तो बहुत ही false statement है. France के अंदर students studies are very expensive. Fourth one pursue technology course in IUT. So yes, this is true. IUT का full form ही है Institute of University of Technology. And fifth one, Ali is interested in letters and human science. So again, this is false. Ali was interested in it, but Pauline was not interested in it at all. Great. Moving forward. The next thing, students, let's see in the textbook. What do we have in the textbook? Yes, we have this match the pair. So students, let's go for the match the pair now. First is enfant, a child. So students, a child. So you have to just match the two columns. Child goes in école maternelle. École maternelle is nursery college. Baccalaureate, students, baccalaureate is being done in the lycée, higher secondary school. Faculty is like university or college. Okay, so this is like university for us. Technology के लिए IUT हमने अभी देखा तो उसका full form ही है. And brevet is can be done in college. Brevet is equivalent to 10th standard. आपको लिखना तो लिख लो. Brevet is equivalent to 10th standard. और जैसे इंडिया के अंदर we say school during 10th standard, but in France they call it as college. Great. Chalo. Moving forward after that, let's see what do we have next. So again, students, there is some English translation given to us over here. The conversation is between the professor and the child. Okay, the kid. So कैसे करती हूँ pense faire après ton bac? What do you think to do after your baccalaureate, bac 12th standard? So the student says, I will go. Again, future simple tense. Future tense, I will go to the university when I will have done or I will have finished my bac. So the plan of the kid is to go to the university. The professor say, and you, what do you want to do after your studies in the university? And after your studies in university, what are your plans? So he says, I will leave to abroad to search for some work when I will have finished my studies. So after completing his studies in university, his plan is to go to abroad and to find some jobs. Great, man. Amazing. Moving forward, students, the next thing that we have is future antérieur. Okay, बच्चे लोग. तो future antérieur देखो, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो future antérieur को लोग डिजाइन किया हुआ है.
ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस है स्टूडेंट्स, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस के जस्ट पहले ही आता है हमारा फ्यूचर ऑनटेरियर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो द एक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, ओके, एंड फ्यूचर टेंस के जस्ट पहले आएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, सो इसका मतलब ऑनटेरियर का मतलब ये दैट बिफोर फ्यूचर, ऑनटेरियर इज बिफोर, रिप्रेजेंट एन एक्शंस ऑनटेरियर बिफोर एन एक्शन इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर ऑनटेरियर इज एन एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बिफोर द एक्शन इन द फ्यूचर, ओके, मतलब होगा फ्यूचर में ही, पर वो फ्यूचर तक पहुंचने के पहले कौन सी दूसरी एक्शन है वो हमें बताई गई है, ओके। चलो, हाउ टू कॉन्जुगेट इन द वर्ब स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दैट थिंग कि अगर एक वर्ब हमें दिया हुआ है तो उसको कैसे कॉन्जुगेट करेंगे। फ्यूचर ऑनटेरियर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फ्यूचर ऑनटेरियर स्टूडेंट्स हैज टू बी सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस इट इज समवट लाइक आर पासे कंपोज, अगर आपने पासे कंपोज किया होगा स्टूडेंट्स उसमें भी एत्र या अववार दोनों में से एक ऑप्शन होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर एत्र होगा या तो फिर अववार होगा, एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हमने किया था ईआर का ई एक्यूट, आईआर का आई, आर का यू। खाली फर्क इतना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा एत्र या अववार है वो कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो हमारा जो एत्र और अववार प्रेजेंट टेंस में नहीं है, इट इज इन द फ्यूचर टेंस, सो सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एत्र और अववार इन द फ्यूचर सिंपल टेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नाउ दिस इज द रूल फॉर future ऑनटेरियर, so if you want you can just take a screenshot and copy this down notes very nicely। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ देखना है, मैंने फ्यूचर टेंस को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोग के लिए। व्हाट इज द टेंस फॉर फ्यूचर टेंस, सो फ्यूचर टेंस में there has to be a subject pronoun प्लस स्टैम्प ऑफ द वर्ब क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा स्टूडेंट, स्टैम्प ऑफ द वर्ब इज इन्फिनिटिव, एंड प्लस एंडिंग्स ऑफ अववार, एंडिंग्स ऑफ अववार यू कैन सी ओवर हियर ए आई ए एस ए ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी, ओके। तो ये ओ एन एस और ई जेड के ऊपर यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क क्यों किया, बिकॉज वो अववार में भी थोड़े चेंजेस है इसीलिए। और स्टैम्प ऑफ द वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, ई आर का ई आर, आई आर का आई आर, आर ई का आर, सबके लास्ट में आर आना कंपलसरी है, आर लास्ट में आना कंपलसरी है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू, पॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू इट, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये जो स्टैम्प है ना वो फिक्स नहीं है, थोड़े बहुत वर्ब्स का कुछ स्टैम्प में अलग भी है, सो यू कैन सी मैंने एक लिस्ट भी दे दी आप लोग के लिए, एंड द लिस्ट सेज एक्सेप्शन ऑफ फ्यूचर स्टैम्प। सबके लास्ट में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स फ्यूचर स्टैम्प के लास्ट में कंपलसरी आर आता है, लास्ट में आर आएगा, इफ यू जस्ट नोटिस दिस थिंग। सो अवर का AUR, एत्र का SER, आलेर का IR, फेर का FER, वनीर का VIENDR, the word DEVR, envoyer ENVERR, and so on. You can just read it nicely, pause the video and go through it. If you want, you can copy this down. This is a very important list. Okay बच्चे लोग, और आपको ये स्टेम को लर्न करना होगा, आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है। चलो ग्रेट, so students the same thing has been explained over here. Let's start Après le Bac. So what do they have is, look students, यहाँ पे लिखा हुआ है a presentator, very important word, presentator of television is the anchor of the television, interrogates the students who is going to pass their baccalaureate. So he is going to interrogate, मतलब he basically is taking an interview of all the students who is soon going to complete their bac is basically 12th standard. So complete the given dialogue with the help of the given words, okay. So students, they have given us 10 different words, and in the first question we have 10 options. चलो, so मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, it will be helpful for all of us. Okay, कुछ ज्यादा zoom हो गया, but ठीक है चलेगा। 10 options. So the presentator, so I'm going to just tick mark wherever I'm reading, okay. The presentator, okay, the presentator, what do you want to do when you dash your baccalaureate? तो presentator मतलब interviewer, students इसका main क्या है, उसका sentence क्या है। So यहाँ पे देखो वो फॉर्म दिया हुआ है, वो तो वो में हमारे पास कितने, we have 10 options given to us, you can go through each one of them. ईरे आलेर वर्ब है, will go, आपको चाहिए वहाँ पे मीनिंग लिख दो, will go. पासरे मतलब will pass, शशरे मतलब will search, फरे मतलब will do, स्विवरे मतलब will follow. Entre मतलब will enter. और फिनी मतलब will have finished. और यू मतलब will have had बोल सकते हैं, और will have done. और termine will have finished, and और obtenu मतलब will have obtained. ओके चलो स्टूडेंट्स, देखो अभी एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अब तक नहीं बताई आप लोग को, चलो वो भी मैं आपको पीपीटी पे बता देता हूँ, कि अगर एक सेंटेंस में 2 डैश दिए होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें से किस वाले में ऑनटेरियर यूज करना है या तो फिर हमें फ्यूचर सिंपल यूज करना है। तो स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। इफ यू फाइंड दिस वर्ड्स इन द सेंटेंस, सो इमीडिएटली इसके बाद फ्यूचर ऑनटेरियर आएगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वर्ड्स, ओके, आई एम गिवन ओवर हियर। आपरे का मतलब आफ्टर होता है, ओसी तो एज सून एज, दे का एज सून एज, लॉर्ड्स का व्हेन, का मतलब भी व्हेन, और यूनफोआ का मतलब वंस।
इफ यू फाइंड दिस वर्ड्स इन द सेंटेंस, तो उसके बाद एग्जैक्टली आपका फ्यूचर ऑन्टेरियर आएगा ही आएगा. सो इट्स अ गुड हिंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. दिस इज मतलब जो मैंने दे दिया ऑलरेडी. फाइन. So the first student says après ma baccalaureate. अच्छा, first वाले का आंसर. What do you want to do when you have finished your baccalaureate? So students उसका first answer हमें well you have वो form है, वो form. तो मुझे देखना है वो form किधर है यहाँ पर. हमारा सिर्फ एक ही वो form है students, तो मेरा आंसर यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ. Okay, when you will have finished your baccalaureate. So the kid one. Now I'm over here. Kid one. Après ma baccalaureate, I will go to FAC. FAC is university students. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा आई विल गो आएगा. आई विल गो, मैंने यहाँ पे फ्यूचर सिंपल यूज किया. फ्यूचर सिंपल, आई विल गो टू द फाक मतलब यूनिवर्सिटी. सेकंड LF2. अब अगर आप देखोगे सेकंड लेवल पे पहुंच चुका, यहाँ पे लॉस का वर्ड दिया. लॉस का वर्ड दिया मतलब फ्यूचर ऑन्टेरियर आएगा. व्हेन आई डैश माय बाक. ओके, तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे नंबर 3 लिख रहा हूँ. व्हेन आई विल हैव फिनिश्ड माय बाक. मैं सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ. और अगर आप लोग ने ऊपर अगर नोटिस किया होगा, कॉम्प्रिहेंशन में भी सारे वर्ड्स दिए थे थोड़े बहुत. सो व्हेन आई विल हैव फिनिश्ड माय बाक, आई डैश डॉन सर आयुते. सो आई विल एंटर है यूनिवर्सिटी ना. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लग रहा है आंसर 3 आना चाहिए. आई विल एंटर इन अ डॉन सर आयुते. चलो ग्रेट. आफ्टर दैट नेक्स्ट फोर्थ वन. अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स किड 3 पे हूँ. après mon bac je dash une formation professionnelle. so après mon bac I will suivre आएगा स्टूडेंट्स. I am going to pursue a professional course. यहाँ पे भी मैंने फ्यूचर सिंपल यूज किया है. किड 4 वापस कॉ वर्ड आ गया स्टूडेंट्स. कॉ वर्ड है यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर. कॉ वर्ड है मतलब फ्यूचर ऑन्टेरियर आना चाहिए. अगेन व्हेन आई विल हैव, तो स्टूडेंट्स अभी वापस सेम वर्ड है. देखो नंबर 2 और नंबर 4 में भी सेम था. तो अब मैं यहाँ पे EU वाला लिख देता हूँ. ये मेरा आंसर नंबर 5 आएगा. व्हेन आई विल हैव माय बाक je dash a concours pour entrer. I will dash a concours, a competition to enter in the superior school. तो I will je ferai आ सकता है. I will do. और कौन सा, je aurai obtenu. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन je passerai लिख सकते हैं. यस, passer लिख सकता हूँ. I will pass a competition to enter in the superior school. Next after that, what do we have after that? Fifth. अब किड 5 पे हूँ मैं. après mon bac, again normal स्टूडेंट्स खाली फ्यूचर सिंपल आएगा. je dash this एtude de technology. so I will do आ सकता है. यहाँ पे I will do लिख सकता हूँ. अब मैं नंबर 7 लिख रहा हूँ. I will do my technology of studies. Sixth one. अब लास्ट किड पे स्टूडेंट्स 7 और 8. यहाँ पे 7 हो चुका है, 8 बाकी है. 1 2, मेरा नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है. अच्छा, मैंने 3 2 बार लिख दिया है. Wait, there's too much of confusion with all the numbers. 1 second. Let me just rub these numbers. I'll help you out properly. How do I do it, man? Okay. वो बोले फेयर, वो डैश, वो baccalaureate. What? अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स EZ था, तो यहाँ पे तो हमारा आंसर यही आना चाहिए. नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. I will after my baccalaureate I will enter in the FAC. Just 1 second. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए एकदम सारे नंबर्स एकदम करेक्टली लिख लिए हैं. और हम लास्ट वन डिस्कस कर लेते हैं, लॉस का. लॉस का मतलब व्हेन आई विल हैव फिनिश, आई विल हैव ऑब्टेन. ओके, 9 नंबर देखो मैंने यहाँ पे लिखा. आई विल ऑब्टेन माय डिप्लोमा. आई विल सर्च फॉर अ जॉब. तो आप शांति से गो थ्रू कर सकते हो. सारे आंसर्स एकदम परफेक्टली मैंने लिख लिए हैं. आप भी वहां पर लिख लो. एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड लर्न द वर्ड्स. क्या वर्ड आपके लर्न करना इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्च एंड जॉब होता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंटर इन अ यूनिवर्सिटी होता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट IUT के लिए हमने कौन सा वर्ड लिखा था? 1 2 3 4 एंटर इन यूनिवर्सिटी था. तो हमारा नंबर 2 था आई विल गो टू द यूनिवर्सिटी, आ सकते हैं यहाँ पर. वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 3 है आई विल pursue a professional course. very important. I will pursue a professional course. I will pass a competition. ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा. And I will do technology studies. ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था. ठीक है, चलो बच्चों लोग आगे के एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कंप्लीट द फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑन्टेरियर. ओके, सो फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑन्टेरियर सबसे पहले मैंने बताया था. देखो ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, तो पहले हम जो वर्ड लिखेंगे फ्यूचर ऑन्टेरियर लिखने वाले हैं, और उसके बाद हम फ्यूचर सिंपल करेंगे. सो फर्स्ट वन कॉन्जो. तो क्या करना है मुझे, फेयर वर्ब है तो AURAI और FAIT. पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, जॉ फॉर्म में दिया हुआ है तो जॉरे सब्जेक्ट. अच्छा, इसके नीचे भी आई गेस सेम 5 सेंटेंसेस है, तो मैं एक काम करता हूँ सबको एक ही स्क्रीन पे एक साथ में लेने की कोशिश कर लेता हूँ. ओके, पांचों के बाद एक ही स्क्रीन में एक साथ में आ गए. मैं यहाँ पे साइड में नंबर लिखते जाऊंगा, आंसर भी साइड में यहाँ पे नंबर वाइज लिख देता हूँ. मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर.
तो AURAI Jorefe आएगा और Fe when I will have done my work, when I will have done my work, I will go to the university आएगा. चलो तो I will go to the university. तो IRAI मैंने पहले क्या किया स्टूडेंट्स, पहले मैंने फ्यूचर ऑन तेरे यूज किया, सेकंड में फ्यूचर यूज करने वाला हूँ. सेकंड वन लॉस का ज तो AUR वापस स्टूडेंट सब में G अपॉस्ट्रोफ आएगा. ओके G अपॉस्ट्रोफ, यहाँ पे भी G अपॉस्ट्रोफ कर देंगे. AURAI जॉरे, फिर पास्ट पार्टिसिपल श्वाजी जॉरे श्वाजी सौर रे AI. ओके पहले फुल वर्ब लिखेंगे और AI लिख देंगे. सो व्हेन आई विल हैव चूजन अ बुक आई विल गो आउट. I will go out. When I will choose a book I will go out. थर्ड वन ओसीतो एज सुन एज किल. ओके इल फॉर्मेशन रिफ्लेक्सिव वर्ब हमेशा इतने के साथ आता है. इल सरहा लवे प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करें स्टूडेंट्स. पास्ट पर्सन में यहाँ पे ई एक्यूट आएगा, ER के ऊपर ई एक्यूट आने वाला है. और उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, आल्यूम ALLUMER ए. तो कौन इल सरा लवे इल आल्यूमरा, तो यहाँ पे ई एक्यूट डाल दूंगा मैं. सो व्हेन ही विल wake up, as soon as he will wake up he will switch on the light, he will switch on the light. Fourth one conus. चलो nus AURON oro termine. Conus oro termine in mesitude when we will have finished our studies. Nu AURON we will have AUR फिर ONS आएगा, our का stamp AUR. We will have our brevet. Brevet means 10th standard होता है. देखो as soon as AUR again L oral you when she'll have finished a book for a FERA she will go for a walk, she will go for a walk. Great. चलो सारे आंसर मैंने लिख दिए स्टूडेंट्स, आप लोग को चाहिए एक बार टाइप कर लो and make sure that you know the English translation also very nicely. यहाँ पे स्टूडेंट्स E acute आएगा बस, that's E acute. चलो I'm going to drop this part and move forward now. So we have completed page number 14. Students, page number 15, what they have, page number 15 is my favorite number. Okay, so it is going to explain us about the entire education system. The teaching in France, like in India, is public. Okay, and it's free and it's compulsory till 16 years of age, whereas in India, students 14 years of age. India के अंदर 14 साल तक, and France में till the age of 16 it is compulsory for you guys to study. Okay, compulsory है. तो government schools है which will provide you free schools. Okay, free studies. So now let's compare France and Indian education system. France, the first thing that they have is equal maternal, and same we have equal maternal students. Equal maternal is a nursery school which is completely similar. Then when you go to the primary school students, they go in the descending order: 12, 11, 10, 9, 8, 7. Whereas we do that 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is a primary school. We can see this primary school over there. These have they have the standards: 12th standard, 11th standard, 10th standard, and 8th standard in the descending order. Then you enter into college. So in India, we are still in school, 6, 7, 8, 9, 10, we are still in school, but these people call themselves being in college. Okay. Next is 6, 5, 4, 3. So they have after this students, they go into lycée. They go into lycée, and these are their standards. Whereas we have secondary school over here. Okay. And brevet is a 10th standard exam that they appear. After 10th standard students, they have general lycée or professional lycée over here. So this entire part is their college. This entire part is their college. And over here, when they go to 11th and 12th, they call as baccalaureate. Fine. And baccalaureate is their 12th standard equivalent to 12th standard. We call it second higher secondary school in India. Then after their 12th standard, they go to university. They go to different courses. Okay. Institute for studies, they have diploma studies over there, whereas in India we have professional courses. Okay, arts, science, commerce, and so on. So important students is over here. The major difference, if you see, the major difference they have college over here, whereas we still call ourselves being into school when we are into 10th standard. Okay, great. So there are a few questions over here. Let's start. Après Entre. Let's zoom this part. So, après entre temps, I call maternal. At what age one enters in the maternal school? So let's find the answers over here. Okay. So one enters in the maternal school at the age of 2 years old. At the age of 2 years old. Fine.
Next question we have is, in which class one enters in college? So students, one enters in college in the sixth standard. Third answer we have is, one can have diploma of brevet when one finish the studies in college. So once you finish the studies in college, then you get your brevet. Okay. देखो third question था, when which diploma one gets when you finish the studies in college. So college में studies complete कर दो, you get brevet. Brevet is equivalent to a 10th standard. Okay. Fourth one shows U4 where is it necessary to go to do the baccalaureate? Where is it necessary to do the baccalaureate? So the answer is, it is necessary to go to lycée. Very important, lycée for 12th standard they call themselves. Okay, so that is lycée. And fifth one, combien d'années? How many years does one pass in a primary school in India? So in India, one passes 5 years in a primary school. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 years. Sixth one, at what age one enrolls a child in the school? So one enrolls a child in the school at the age of 3+ years. Okay, once you complete your 3 years, you enroll the child in the school. Seventh one, quel diplôme? Which diploma one obtains at the end of secondary studies in India? So that is, one obtains a secondary school certificate, that is 12th standard. We call it HSC also over here. And finally, 8.1, which subjects do you study? So I study maths, history, English, and science. So we have so many subjects over here. So if you want, students, you can pause the video and you can copy this down nicely. This will surely help you out in your exams. The next thing is, students, let's observe something. They have given us few verbs, 2 columns over here. The first column consists of verbs and the second column has noun form of those particular verbs. So arriver is to arrive and un arrive is arrival. Entre is to enter, un entre is entrance. Sortir is to go out, un sortir means exit. So this is exit over here. Étudier is to study and un étude is studies. S'intéresser is to be interested. Okay. And entrer is interest. Soulager. Okay. So students, soulager means relief. Soulager is to relieve and soulagement is relief. Soulager is to relieve. Soulagement is relief. Partir is to leave. Partir is to leave. Depa is departure. Consume is to consume. Un consommation is consumption. Encourage is to encourage. Encouragement is encouragement. Ashita is to buy or to purchase. And Asha is purchases. So students, in your board exam, they can give you for 1 marks. They will ask you a verb and they will ask you to find the noun form of that particular verb and vice versa. Chalo. So we are on the next page number 17. So I'm revising what I've just learned. Okay, you see this is passé leçon. Do you notice, friends, over here? Subject plus venir plus de plus infinitive. Passé leçon. So I am going to revise. I'm revising what I just learned. Let's start. We'll see what's the English translation of this. There's a conversation between Dennis and Akansha now. C'est vrai, et quand est-ce que tu dois partir? Is it true? And when is it that you have to leave? So Akansha says, yes, certainly. I would like to rejoin my grandparents, but I will miss you all a lot. Okay, I will miss you a lot. So basically, students, Akansha is planning to go back to India. Okay, so Dennis says, hi, Akansha. So you say, Achha, what you can do is you can just write English translation and then, students, we have to put the entire thing in the order. Okay, put the entire thing in the order. Order is we have to put the dialogues in order. So you say, my parents are coming back from India. So Dennis says, no, thank you, do not worry. On peut toujours rester. One can always stay in contact on Facebook. So Akansha says, hi, Dennis. So Dennis says, does it please you to go to India? Does it please to go to India? So Akansha says, yes, after the Bac, I believe. After the Bac, I believe. Or a class word, kisse pass, what is happening or what happened? So students, they have given us so many conversations over here. The sentences, we have to frame an entire dialogue nicely. Shalom. So students, I have already solved this on the board. You can just see. मैं एक बार उसको read कर लेता हूँ. Hi Akansha, hi Dennis. What is happening? So Akansha says, you says my parents are coming back from India. So then it says, is it true? And when is it that you have to leave? So Akansha says, after the Bac, I believe. So after completing 12th standard, Akansha is going back to India.
So Janice is asking, does it please you to go to India? Akansha says, yes, certainly. I would like to rejoin my grandparents, but I will miss you all a lot. I want to go back home also, but at the same time, I'm going to miss all of you a lot. So Janice says, do not worry. One can always remain in contact on Facebook. Don't worry, we will remain in contact on Facebook. So Bindas, you can go and you can come back. Not a problem at all. Chalo, great. Moving for the next one, students. Again, what we have is we have a match the column over here. So let's solve this. So it says match the words of column number 1 with the column of 2. Okay, so we have to just match the pair. So first is Entre. So students, Entre a la fac aega, so enter into university. Passer. Passer or concours is basically to pass a competition. Suivre une formation is to pursue a course. Sortir is to go out from the school, and finally réussir is to succeed in an exam. Okay, chalo, great. So the best part about the video, students, I'm going to help you with the answers, and at the same time I'm doing the English translation of each and everything word to word, page wise page for you. Okay, next is give the nominal form of the verbs of the following verbs and make some phrases with these nouns. So bache log, they have given us verbs. We have to find the noun form of the verb first, and then we have to make a sentence also. Great. So we have how many verbs over here? In all, we have 5 verbs. चाहिए तो आप English translation लिख लो. Arrive is to arrive, acheter is to purchase, vendre is to sell. Décourager is to demotivate, okay, discourage. And souhaiter is to wish. So coming back on my PPT again, students, look, I have already written the answers over here. So arriver students, so uska noun hai l'arrivée, arrival. And j'attends, I am waiting for the arrival of the spring season. L'achat, achat is purchases on weekend. Je fais des achats, I do purchases with my mother. Weekend, I do some purchases with my mother. La vente, vente is sales. So the office is on sale. Vendre verb tha wanted to sell. La vente is sale, and the office is on sale. Le bureau est en vente. Le découragement, décourager is to discourage. Le découragement is discouragement, and discouragement n'est pas bon, is not good for life. And finally, we have le souhait. Le souhait means wish. So do you have a wish for your birthday? Question mark. Great. Going back to question number 4 again, students, and we says réécris le dialogue. So you have to rewrite the dialogue, following dialogue, by correcting the faults if there is any. Okay, bache log. So what they have done is they have given us few sentences where they have made some mistakes, and we have to find out the mistakes over there. Okay, sure. Give me just 1 second. So starting with the first one, le père, the father says, dis-moi, tell me, quand finissais-tu ton devoir? So students, when, अब यहाँ पे students पूरे chapter में हमने use किया या तो future tense या तो future anterior, okay? So students यहाँ पे I assume यहाँ पे mistake है fini और बाद में as आना चाहिए. Quand finiras-tu? When will you finish your homework? So the son says, après mon devoir, after my homework, what I should do. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, फर्स्ट वर्ब कॉन्जुगेट हुआ है, पर ये सेकंड वर्ब हमेशा क्या आना चाहिए? फुल वर्ब आना चाहिए, फुल वर्ब. सो यहाँ पे हमारा आंसर स्टूडेंट्स ये फेयर, FAIRE, फेयर फुल वर्ब आएगा. थर्ड वन, नू पूरे, ओहो, नू के साथ स्टूडेंट्स कभी भी POURRONS आना चाहिए. सो नू पूरा, we will be able to watch television. Okay, we will be able to watch television. The son, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Qu'est-ce qu'il a नहीं आएगा, il y a के बाद स्टूडेंट्स il और या आना चाहिए. What is there? Il, yeah. What is there on the television? What is there on the television? So call la nouvelle, the news sera terminée. अच्छा, terminée स्टूडेंट्स avoir, AURA, avoir के साथ आएगा, तो यहाँ पे agreements भी नहीं लगेंगे. Quand la nouvelle, so when the news will have finished. Again, ON के बाद भी students AURA आना चाहिए. Aura, one will have a good film. So when the news will finish, one will have a good film. तो दोनों में students mistake है. And finally, après mon devoir, after my homework, je voudrais, VOUDRAIS आएगा. Je voudrais, I wish to go to see my friend. Okay, students. So यहाँ पे जो भी mistakes थे मैंने सारे के सारे correct कर दिए हैं. आपको चाहिए तो मैंने यहाँ पे कुछ sentences लिख के भी रखे हुए. You can just go through them. Nicely sentence लिख दिए हैं. और जहां पर भी मिस्टेक्स इसको मैंने हाईलाइट भी कर लिया है आपके लिए स्पेशली. फाइन, ग्रेट.
Then we have is question number 5 and going with the last question now, which says रेताबली लौद्र. So you have to make the right order of the words in the given phrase. तो स्टूडेंट्स उन्होंने कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ज फिनी. सो यू हैव टू देखो स्टूडेंट्स हर एक के अंदर इसका मेन फंडा कैसा है ना, आपको हमेशा शुरू सब्जेक्ट और वर्ब से करना है. ओके सो इसमें आपको दिख रहा है जीरे जो के बाद और आएगा जोरे फिनी. आई विल हैव फिनिश माय वर्क इन 2 minutes. तो आई विल हैव फिनिश हर एक का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख लो और इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद में इट विल हेल्प यू टू फ्रेम द सेंटेंस. ओके तो और ही इसका और कोई तिगड़म तो नहीं है फिलहाल सॉल्व करने के लिए हमारे पास. ओके सो लेट्स सी. मैंने सेंटेंसेस के आंसर्स लिखे रखे आपके लिए. Okay, so first one conversation is when I will have finished my work in 2 minutes. I will have finished my work. Après avoir fini or the while. So students again यहाँ पे क्या है? Après avoir fini. ये भी एक रूल है. Après avoir plus past participle. After having finished his homework, he will see a film. He will see a film. Quand il sera rentré. When he will have come back from school, il ira. He will go to play tennis. He will go to play tennis. Elle sera partie. She will have left earlier than before. She will have left earlier than before. And finally, je n'aurai pas. I will not have done the homework. I will have not done the homework. Je n'aurai pas failed. The one negative है तो students first verb के आगे पीछे ना पाएगा. So students, the main purpose of the making video is so that you can just find the answers of each and every particular exercise nicely. The plan is to record the entire book. Okay, page wise page मैं अच्छे से record करूँगा so that आपको समझ में आए अच्छी चीजें. Students, if you found anything confusing or if you couldn't understand something या आपको कुछ अच्छा भी लगा हो positive or negative, please put down in the comment section. Make sure to please like our videos and subscribe to our channel and spread it to all your friends. Tell them how amazing these videos are. And last minute revision करने के लिए भी students फटाफट आप video लेकर बैठ सकते हो, एक बार book में पूरा का पूरा solve कर सकते हो, and this will really help you out. Okay, so students, question number 6 what I am skipping right now is the writing skills part. जैसे मैंने पहले बताया था हम सारे writing skills last में एक साथ में करेंगे. So it says write a letter to your Canadian friends speaking about the education system in France. So काफी ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स. आपको जो पेज नंबर 15 पे एक्सप्लेन किया हुआ था वो आपको पूरा करना यहाँ लिखना है, बट कैसे और किस तरह से लिखना है वो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. ओके सो आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय एंड बाय बाय. टेक केयर.